अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अच्छा जी, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नॉवेलिस्ट ऑफ द अर्ली विक्टोरियन पीरियड। इसके पहले हमने जो टॉपिक कवर किया था वो था पोइट्स ऑफ द अर्ली विक्टोरियन पीरियड। ठीक है जी, अर्ली वाले पहले हम कर लेंगे, उसके बाद जो लेटर एरा के पोइट्स होंगे, नॉवेलिस्ट होंगे, उसके बाद फिर हम करेंगे। ठीक है जी, तो आज जो टॉपिक है वो है novelists of early Victorian period. So in the early Victorian period, novels made great progress. ठीक है जी, नावल ने की बहुत बड़ी तरक्की की। कब? इन द early Victorian period. So novel produced during this period took various shapes. जो इस दौर में जो नावल्स लिखे गए उसमें वो क्या शेप लेते गए, मुख्तलिफ शेप्स लेते गए, जैसे कि सरमन्स, political pamphlets, philosophical discourses, social essays, autobiographies and poems in prose. ठीक है जी। अच्छा जी, the next point we have is that the most outstanding novelists of the period, of which period? Of the early Victorian period, were the Charles Dickens and William Makepeace Thackeray. ठीक है जी। अच्छा जी, आज जिस नॉवेलिस्ट के बारे में हम बात करेंगे वो है चार्ल्स डिकन्स। वैसे तो आप ये बात समझ लें कि हमने जैसे पढ़ा अपने एक पॉइंट में कि द मोस्ट आउटस्टैंडिंग नॉवेलिस्ट ऑफ दिस पीरियड वर चार्ल्स डिकन्स एंड विलियम मैकपीस थैकरे। ठीक है जी, एंड दीज वर द मेजर वंस, राइट। सम ऑफ द माइनर नॉवेलिस्ट ऑफ दिस एरा वर डिज़रेली, ठीक, and Bronte sisters, and Mrs. Gaskell, and Charles Kingsley, Charles Reid, and Wilkie Collins, and Trollope. All of these novelists had some kind of similarities among themselves. In first place, these novelists identified themselves with their age. ठीक है जी, अपने एज से उन्होंने एक मुताबिकत इख्तियार की, and they were the spokesmen. ठीक है जी, and they were the spokesmen of their era. Whereas the novelists of the later Victorian period were critical and even hostile to its dominant assumptions. ठीक है जी, पहले जो पहले एरा के मतलब अर्ली विक्टोरियन पीरियड के जो नॉवलिस्ट थे वो क्या थे? दे आइडेंटिफाई देमसेल्व्स विद देयर एज, अपने एज से एक मुताबिकत अख्तियार की, एंड दे वर इट्स स्पोक्समैन। वेयर एज द नॉवलिस्ट who came in the later Victorian period were very critical. ठीक है जी, and today we are going to discuss Charles Dickens, who lived from 1812 to 1817. Okay, the first point which we have is that Charles Dickens is the chief among the early Victorian novelists. ठीक है जी, वो एक चीफ था। किस चीज़ का चीफ था? वो अर्ली विक्टोरियन नॉवलिस्ट का, एंड मोस्ट पॉपुलर ऑफ ऑल इंग्लिश नॉवलिस्ट सो फार। और इंग्लिश नॉवलिस्ट में का सबसे पॉपुलर नॉवलिस्ट है वो। एट द एज ऑफ 25, विद द पब्लिकेशन ऑफ पिकविक पेपर, Dickens suddenly sprang into फेम। अच्छा जी, किस एज में इसने पिकविक पेपर लिखा था? 25 ईयर्स के एज में। अच्छा, एक ये प्लीज़ अपने साथ बार बार मैं एक वीडियो में एक बात करती हूँ कि आप अपने साथ ये लिख लिया करें। सो एट व्हाट एज डिड चार्ल्स डिकन्स रोट पिकविक पेपर्स? एट द एज ऑफ 25। या इस तरह भी आपको MCQ आ सकता है कि एट द एज ऑफ 25 विच which novel of Charles Dickens got published? So it was Pickwick Paper. ठीक है जी। The next point we have is that his early novels like Pickwick Paper and Nicholas Nickleby, Dickens followed the tradition of Smollett. ठीक है, ट्रेडिशन ऑफ किसकी ट्रेडिशन को फॉलो किया था डिकन्स ने? निकोलस निकलबी में एंड पिकविक पेपर में स्मॉलेट की। और वो क्या ट्रेडिशन था? दैट दे वर मेयर बंडल्स ऑफ एडवेंचर्स, सिर्फ एडवेंचर के एक बंडल थे, कनेक्टेड बाय मीन्स ऑफ करेक्टर। ठीक है जी। अच्छा जी, किस तरह थे कि ये जो इसके जो ये दो नॉवेल्स थे, ये किस चीज़ के बंडल्स थे? एडवेंचर के बंडल्स थे, और किसके थ्रू एक दूसरे से कनेक्ट हुए थे? बाय द मीन्स ऑफ करेक्टर। ठीक है जी। अच्छा जी, द नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज़ दैट इन मार्टिन चज़लविट, डोम्बी एंड सन, डेविड कॉपरफील्ड, he made some effort towards the unifications, while
In these in these three novels, he made conscious effort towards the unifications. But even here, but फिर भी क्या कमी रह गई इसमें? But even here, the plots are loose. मतलब they were not closely knitted with each other. Now, what is loose plot and a coherent plot? I have made a video on this. You can check it out. If I remember तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे दूँगी. ठीक है जी. अच्छा जी. The next point we have is that in Bleak House, he succeeded in gathering all the diverse threads of a story in a systematic and coherent plot. ठीक है जी. फिर ब्लीक हाउस में उस इतना कामयाब हुआ कि उसने ऑल जो डाइवर्स थ्रेड थे स्टोरी के वो सिस्टमेटिक एंड कोहरेंट प्लॉट में पुट कर लिए उसने. अच्छा जी. द नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज़ दैट हिज लेटर नॉवेल्स सच एज डोरिट, अ टेल ऑफ टू सिटीज़ and the unfinished novel called as the Edward Drood, they were systematically planned. मतलब एक के बाद फिर बी आया और बी के बाद फिर सी आया. इस तरह नहीं था कि एक बी के बाद फिर ए आया और फिर जेड आया और फिर ई आया और फिर एफ आया. ठीक. So they were systematically planned. Which three novels of Charles Dickens were planned? Dorrit, A Tale of Two Cities, and the unfinished novel named as Edward Drood. ये आपके पास एज MCQ भी आ सकता है कि what was the name of the unfinished novel of Charles Dickens? So it was Edward Drood. So the next point we have is that his novels are full of pathos. Now, what is pathos? Do you know what is pathos? Pathos is basically a quality that evokes pity or sadness. ऐसी quality जो किस चीज़ को evoke करती है, किस चीज़ को उबारती है? pity को और sadness को. ठीक है जी. अच्छा जी. There is also a great idealism in his novels. ठीक है जी. डिकन्स के novels में हमें great idealism भी दिखाई देती है. Best examples of Dickens' idealism is found in A Tale of Two Cities, where he preaches a sermon on the sublime text. ठीक है जी. जिन लोगों ने A Tale of Two Cities पढ़ा है वो इससे बात से मुतफिक होंगे कि ये क्या सा अजीम नावल है. This is such a great novel. And what does he preaches on this in this novel? He tells us that greater love path no man than this, that a man lay down his life for his friends. ठीक है जी. एक इंसान के लिए सबसे बड़ा प्यार का जो जज्बा जो वो रखता है किसी के लिए, तो वो किस में शो करता है कि एक इंसान या एक बंदा अपने फ्रेंड्स के लिए जान दे सके. और वो ये क्यों कहता है, ये आप ये नावल पढ़ ले तो आपको समझ आ जाएगा. ठीक है जी. ओके. The next and the last point we have is that besides being an idealist, Dickens was also a realist. ठीक है जी. आइडियलिस्ट होने के साथ साथ डिकन्स क्या था, वो एक रियलिस्ट भी था. ठीक है जी. सो ही बिगन हिज लिटरेसी करियर एज अ रिपोर्टर. उसने अपने जो लिटरेसी करियर स्टार्ट किया था वो एज अ रिपोर्टर स्टार्ट किया था. एंड देन हिज शॉर्ट स्टोरीज जो किस नाम से पब्लिश्ड होती थी, स्केचेस बाय बोज, and have the air of the 18th century quite observer and न्यूज़ राइटर. जो स्केचेस ऑफ बोज में उसने 18th सेंचुरी को पोइटली अच्छे तरीके से ऑब्जर्व किया था और उसकी झलकियाँ भी हमें इसमें दिखाई देती हैं. और ये बंदा जो था चार्ल्स डिकन्स, ही वाज आल्सो अ न्यूज़ राइटर. अच्छा जी. आप दो चीज़ें तो यहाँ पे समझ ले, इसके बाद हम वीडियो को एंड करते हैं कि आइडियलिज्म किसे कहते हैं. सो आइडियलिज्म इज समथिंग विच प्रेजेंट्स इवेंट्स और सिचुएशंस इन अ पॉजिटिव वे. ठीक है जी. वन व्हाट इज़ इन इंग्लिश लिटरेचर. ओके. देन रियलिज्म. व्हाट इज़ रियलिज्म इन इंग्लिश लिटरेचर और लिटरेचर? Realism in literature is an attempt to represent subject matter truthfully, avoiding fiction and supernatural elements. मतलब उसमें ये फैंटेसीज की जो एलिमेंट्स हैं वो नहीं होती है. इट इज़ द सब्जेक्ट इज़ प्रेजेंटेड as it is truthfully, being avoiding the fictions and supernatural elements as well. Okay. And who is a realist? Like हमने इसमें यहाँ पे बात की कि beside being a idealist, Dickens was also a realist. So who is a realist? Which author is called as a realist?
So realist is an author who choose to depict everyday activities and experiences. ठीक है जी, वो एवरीडे की एक्सपीरियंसेस एंड एक्टिविटीज़ एज इट इज़ आपको बयान करता है ट्रूथफुली विदाउट शोइंग एनी फिक्शन और सुपर नेचुरल एलिमेंट्स. ठीक है जी. सो द नेक्स्ट video which we are going to make, or which we are going to discuss two novelists in the next video, which the two writers which we are going to discuss are William Makepeace Thackeray and the Bronte sisters. Although Bronte sisters were not as famous as Charles Dickens and William Makepeace Thackeray, but we will discuss it. Okay, so that's it for today. Thank you so much for watching my video. We'll see you in the next one. Till then, take care. Allah Hafiz.